Good morning, one and all. And here we're going to start what we with where we left in the last lecture. That is the lapse rate. तो थोड़ा सा इसको बारे में आपको फिर explain कर रहा हूँ. When moving forward fast. और again I'm explaining you basic idea I want to discuss with you. Most of the things I want to discuss with you in today's class, and some of the part now I'm going to leave with you because what I'm getting it, okay, I'm doing a spoon feeding with all of you. So maximum I'm going to explain and little 3 or 4 slides relevant to that. Whatsoever I'm going to explain will be leaving it for you for your understanding. And later on, you can always call me for discussion, no doubt. Okay, so basically I was discussing the lapse rate, the rate of decreasing temperature with altitude. I think so. I told you एयर पोल्यूशन की जब बात कर रहे थे हम एयर पोल्यूशन की हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की उसके बीच में कि you have a mechanical turbulence, you have a thermal turbulence. In the last lecture we have discussed. So basically how the temperature decreases, the how it is going to behave, the pollutant is going to behave and it's going to rise up in the atmosphere. So it totally depends upon the lapse rate. Lapse rate is basically, if you go to the detail of this lapse rate, it's a rate of decrease in temperature and altitude. You know very well. As you go up, the temperature decreases. Okay, so it is a damn important parameter in concept when you go to decide the vertical movement of the air. That is very much important. अब ये देखो ये सब चीजें क्या डिफाइन होगी, मैं आपको फिर डिफाइन कर देता हूँ बेटा, आपको फिर आगे मूव कर जाऊंगा फटाफट. आपने जितनी भी इंडस्ट्री देखी होंगी उस इंडस्ट्रीज के बाद चिमनी लगी होंगी. चिमनी के बगैर इंडस्ट्री नहीं लगेगी आपकी. कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी एक इंडस्ट्री है, तो उसमें एक चिमनी लगी होगी. तो उस चिमनी के थ्रू जब आपकी एयर रिलीज होती है बाहर यहाँ पे, तो नो डाउट सबसे पहले ये चिमनी हाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चिमनी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चिमनी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये प्रिस्क्राइब्ड है डिपेंडिंग ऑन एरिया. किस एरिया में है, किस स्टेट में है, किस लोकेशंस पे है, वहां पे क्या कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले वो डिसाइड होगा कि चिमनी हाइट क्या होगी. तो चिमनी हाइट के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो पोल्यूटेड यहाँ से रिलीज हो रहा है वो कहाँ बिहेव, किस तरह बिहेव करेगा. और कई बार ये चांस हो सकता है अगर ये प्रॉपर डिसाइड नहीं किया आपने, जो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, तो जो भी यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है दे कैन कम डाउन टू योर द पर्टिकुलर प्लेन लेवल एट योर होम्स एट द ग्राउंड लेवल, विच इज वेरी मच डेंजरस. सो दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी दिस पार्ट इन डिटेल. उसकी भी प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर मॉडलिंग की जाती है जब ये इंजीनियर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे बिहेव करेगा. Okay, so जब हम इसको स्टडी करते हैं तो देयर आर three or four type of lapse rate which we're going to study. First is the environmental lapse rate. Environmental lapse rate is no doubt the actual measured decrease in air temperature with increase in altitude. No doubt, it's always when you're going to have an increase in altitude, there's a decrease in air temperature. Environment की बात कर रहा हूं, तो environment की बात करूंगा तो मैं layers of air की बात करूंगा जो different layers हैं. Okay, so usually the ELR, that is environmental lapse rate, is 6.5 degree centigrade per kilometer. So per kilometer rise, increase in altitude, there is a 6.5 degree centigrade decrease in temperature. Then accordingly, this is actual. If you go to theoretical, there are two kind of lapse rates, dry and wet. मैंने लास्ट में समझाया था, इसको फटाफट रिवाइज करता हूँ आपको आपके लिए. ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इज द थ्योरेटिकल रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एयर विद नो मॉइस्चर इन इट. We assume that the air which is there in the atmosphere having a minimum moisture in it. तो moisture उसमें नहीं है, तो we are assuming that air is almost dry. When the air is almost dry, then when you want to have a dry adiabatic lapse rate, that is DALR, it is near about 9.8 degrees centigrade per kilometer. Then we assume the air in that particular condition, like in Mumbai, we can't say it's a dry because near to sea, so always it is having some moisture in that. That is called saturated air. That is called saturated air. So it's a theoretical, WALR is a theoretical reduction in temperature in the elevation in saturated air. Saturated air means the air containing a significant amount of moisture in it. It is much less than DLR. I'm going to explain why. And it is usually 5.6, near about 5.6 degrees centigrade per kilometer. So I think so I have made you this point clear, but wait for some time. I want to make you more clear why the WL is less than DLR. WALR is wet adiabatic lapse rate and DALR is a dry adiabatic lapse rate. And the last category is no doubt your pollutant, the process lapse rate, PLR. प्रोसेस लैप्स रेट इज मींस, अब यहां से जो मैंने बताया चिमनी से पोल्यूटेंट रिलीज होता है उसको बोलते हैं पफ, बोलते हैं पफ ऑफ एयर. सो इस पफ के अंदर आपके पोल्यूटेंट्स हैं, सॉक्स है, नॉक्स है, डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पोल्यूटेंट्स हैं, पीएम है, पर्टिकुलर मैटर है.
So PLR is the rate at which टेम्परेचर ऑफ प्लूटेंट मास, दिस वन जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो पोल्यूटेंट रिलीज हुआ है अभी यहाँ पे, ओके, द पोल्यूटेंट मास ऑफ स्टफ is decreasing with altitude due to expansion of flue gases. You know why expansion? I want to tell you. जैसे ऊपर राइज करेंगे बेटा, नो, वो एक्सपैंड करेगा and its magnitude is between no doubt DLR and WLR. Why? Because it is neither wet or not dry. It's neither completely dry or neither completely wet or saturated. It's in between that. So that's why the PLR is always between DLR and WLR. Okay. So I'm not taking doubts anymore. Okay, process lab rate is almost theoretical. Almost theoretical. We assume it to be theoretical, but we know some composition, then we can really say actual. Now, the important part here is this, what I'm discussing over here, that is the why WLR, the wet adiabatic lapse rate is less than DLR. Now, understand this concept very carefully. Then I move forward. Now, as pollutant rise, you know, when the pollutant rise come to the upper atmosphere, the temperature decreases. Why? Because of the expansion. Yes, not because of the expansion. So once the expansion is being there at high atmosphere, partial pressure no doubt becomes equal to the atmospheric pressure. Exactly. Because gas is expanding. When the gas is expanding, the partial pressure becomes equal to atmospheric pressure. Now, this will cause condensation of vapors. The condensation due to saturation. You know what is condensation? Condensation means the vapors or moisture which are present in the puff or pollutants that in the particular mixture, they are going to condense. क्योंकि वो ऊपर जाके expand करके तो उनके बीच में जो vapor है वो condense कर जाएंगे. Now this condensation, because of this thing release expansion of gases beta. Expansion of gases beta. Okay. Now when it's going to expand, the partial pressure becomes atmospheric pressure, it will cause the condensation of moisture, saturation, that particular vapor, the moisture present in that particular gas. Now condensation, you know, will release the heat equivalent to latent heat of condensation. You must have read in plus 2, latent heat of evaporation and latent heat of condensation. The latent heat of evaporation is when water converts to steam, and the latent heat of condensation is when the steam or vapors condenses back to vapors, condenses back. Okay, so this means when they are going to condense, they're going to liberate the heat. When they're going to liberate the heat, the rate of decrease in temperature will be less. Why? Because जो heat liberate हो गई वो बाहर निकल जाएगी, तो बाहर temperature बढ़ गया उसका additional. किसकी वजह से? जो उसके बीच में moisture था. क्यों? WR में आपका wet है, wet की वजह से moisture होगा. तो मॉइस्चर जब ऊपर एक्सपैंड करेगा, जो मैंने ऊपर फिनोमेना बताया, पार्शियल प्रेशर बिकम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंडेंसेशन, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, द एडिशनल हीट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. व्हेन द एडिशनल हीट इज बीइंग कंपनसेटेड, so there will be more temperature, so the rate of decreased temperature will be less. Why less? Because additional heat contribute कर दी किसने? latent heat of condensation. किसके? वेपर्स ने. क्यों? वो एक्सपैंड हुए. ओके, एक्सपेंशन से वो कंडेंस हो जाएंगे उस चीज के लिए. तो डीएलआर में क्या होता है? डीएलआर में तो आपका ड्राई एडियाबैटिक है बेटा. डाउट्स में अभी लास्ट में लूंगा मैं, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डाउट लास्ट में ले लूंगा. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं डाउट बाद में ले लूंगा फटाफट. ठीक है. मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अब आपका WALR इज लेस देन DLR. वाई? द वेट एडियाबैटिक इज वाई इट्स लेस देन DLR. DALR में आपका कोई मॉइस्चर नहीं है, आपका थ्योरेटिकल रेट है, कोई मॉइस्चर नहीं है, सैचुरेट नहीं है. जैसे ऊपर राइज करेगा, एटमॉस्फेयर जो बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर मूव करेगा. लेकिन WLR में हमने अज्यूम किया है कि उसके बीच में सैचुरेशन है, उसके बीच में मॉइस्चर कंटेंट है, उसमें वाटर वेपर है. लेकिन जब उसके बीच में वाटर वेपर है तो वो DLR के साथ डिफरेंट कैसे बिहेव करेंगे? जैसे ही वो पोल्यूटेंट राइज करेगा, ऊपर पफ राइज करेगा, जिसके बीच में आपके मॉइस्चर भी है, पोल्यूटेंट्स भी हैं, तो वो एक्सपैंड करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और पार्शियल प्रेशर आपको पता है कि जब एक्सपैंड कर गया तो पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Now this will cause the condensation of vapors. The vapors condense हो जाएंगे ऊपर जब ऊपर राइज करेंगे. तो condensation is always being associated with the liberation of heat, that is latent heat of condensation. तो latent heat of condensation रिलीज हुई, no doubt जब रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, जाएगी कहाँ पे? रिलीज साइड में जाएगी, रिलीज जो एटमॉस्फेयर है. तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो कम होना चाहिए था, तो एडिशनल हीट फिर जनरेट होगी. किसकी वजह से? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन वजह से. तो दिस मींस उसका जो एक्चुअल रेट ऑफ डिक्रीज है वो कम होगा,
ट्राई की वजह से। क्यों कम होगा उसका एक्सेलरेशन और डिक्रीज कम क्यों होगा? क्योंकि उसके साथ एडिशनल हीट आ गई। किसकी वजह से? बिकॉज उसके बीच में जो वेट वेपर थे, जो मॉइस्चर था। लेकिन ड्राई में ऐसा केस ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर in WALR is always less than DLR because of the condensation of the vapors present in the gases. ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बेटर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद कोई भी डाउट होगा हम लास्ट में लेंगे, और आप बाद में उसको पढ़ के भी आना बेटा, ठीक है। Now, see, now this is something very important. Now I'm going to explain these fundamentals in detail in the coming slides. अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेयर स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, अब डिपेंड करेगा इन चीजों पे। The stability of atmosphere is dependent upon, no doubt, we want to discuss about ELR, that is environmental lapse rate, as compared to the process lapse rate or adiabatic lapse rate. It can be DLR or WLR, but we would generally we don't take DLR. Now, as per the conditions which we are going to discuss right now, there are three conditions. Either atmosphere is fully stable, unstable, or neutral. It depends upon these three conditions. If it is stable, if ELR is less than PLR, I'm going to explain no doubt in the coming slides. It is stable. And if ELR, the environmental lapse rate, is greater than PLR, the process lapse rate, the puff जो release हुआ है, it is unstable. And if both are equal, it's a neutral conditions. And no doubt, no need of mentioning over here that what kind of atmosphere we want. We want unstable atmosphere. Why? अगर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा, अगर ये कंडीशन होगी, तो मेरे चांसेस है कि जो पोल्यूटेंट यहाँ पे राइज हुए हैं, दे विल टेकन अवे टू द डीप एटमॉस्फेयर। टेकन टू डीप एटमॉस्फेयर मैं बता चुका हूँ आपको कि जितना डीप एटमॉस्फेयर जाएंगे उतनी उसकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन पोल्यूटेंट की डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर स्टेबल हुआ एटमॉस्फेयर, तो ये बट ऑफ चांस है कि जो पोल्यूटेंट यहाँ से रिलीज हुए हैं, एटमॉस्फेयर इज स्टेबल, दे विल कीप स्टेइंग हियर, they will keep staying here. तो जो उसकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन है वो यहीं पे रहेगी, and fair chances that it may fall down on the surface of earth, and that is on vegetation and inhaled by human beings or animals. So we want unstable. मानते हो अनस्टेबल ना? मैं आगे समझाने वाला हूँ इसके लिए। अनस्टेबल why? Because if the atmosphere is unstable, the puff or pollutant which are being released from the chimney, they will be taken by the unstable atmosphere to this place, this place, this place, this place. तो जितना ऊपर जाता जाएगा उसको न्यू एटमॉस्फेयर मिलता जाएगा बेटा। तो जितनी ऊपर जाता जाएगा न्यू एटमॉस्फेयर मिलता जाएगा उसको, तो मेरे ख्याल से उसकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कल लास्ट क्लास में, एग्जांपल फिर दे रहा हूँ, आगे मूव कर जाऊँ। ये बकेट है बेटा पानी की, the bucket of water, this bucket of water is containing this much of water only. Okay, now you drop ink over here, this become blue. Now add more water, add more water, add more water. Slowly and slowly the ink which you have dropped in the little of water, when you add more clear water, it will be faded away. Yes or not? जो फेड अवे हो जाएगी, क्लियर वाटर डालते जाओगे। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है। पोल्यूटेंट यहाँ पे रिलीज हुआ, जैसे अनस्टेबल एटमॉस्फेयर मिला, वो पोल्यूटेंट को इधर ले गए उठा के ऊपर एटमॉस्फेयर में। तो जैसे ऊपर एटमॉस्फेयर लेके गया, वहां पे नया एटमॉस्फेयर मिल गया। नया एटमॉस्फेयर में आपकी कंसंट्रेशन कम है, और जो गया है उसके साथ मिक्स करके उसकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी, और ये अनस्टेबल एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। फिर ऊपर मूव कर गया, उसको नया एटमॉस्फेयर मिल गया यहाँ पे। So this means we want really unstable atmosphere so that the background concentration of the pollutant decreases, and ultimately we can get rid of the air pollution generally. Okay, so this is a first case. Go through it very clearly. The unstable atmosphere. The unstable atmosphere is basically when ELR is greater than PLR basically. So absolute instability occurs when we have ELR is greater than magnitude than the DLR. And for example, let's see first. For example, your ELR for a particular location is 12 degrees centigrade per 1 kilometer, and the DALR is 10 degree per kilometer. Okay. The screen has changed to thermal turbulence. Sorry, beta, मैं तो आगे move कर रहा हूँ. Screen is okay, beta. Are you able to see unstable atmosphere conditions? Okay, done. Sorry, done, beta, done. आपकी बेटा problem है किसी की बेटा? It's fine. Thank you, beta. Now see this. If the ELR is 12 degrees centigrade per kilometer, and DLR, the dry adiabatic lapse rate, is 10 degree per kilometer. Now the parcel of air which is being released from the chimney
with the initial temperature of 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल कूल टू 10 डिग्री। क्यों? क्योंकि डीएलआर आपका कितना है बेटा 10 डिग्री। द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ड्राई है वो, तो पार्सल ऑफ एयर जो है वो 10 डिग्री 20 डिग्री पे लीज हुआ है, और जिस एटमॉस्फेयर में गया उसका डीएलआर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो दिस मींस जैसे वो 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा उसका टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना रह जाएगा 8 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो उस एरिया के अकॉर्डिंगली कितना है 12 डिग्री पर किलोमीटर। तो दिस मींस 1 किलोमीटर पे जाके उसका टेम्परेचर हो जाएगा 8 डिग्री। यस और नॉट? सराउंडिंग एयर 8 डिग्री पे, तो अब सराउंडिंग 8 डिग्री पे है पर पार्सल का टेम्परेचर ज्यादा है, तो दिस मींस पार्सल राइज करना शुरू कर देगा, अभी उसका टेम्परेचर ज्यादा है, देयरफॉर पार कंटिन्यू टू राइज। और यही हम चाहते हैं कि पार्सल जितना ज्यादा ऊपर राइज करेगा, कौन सा पार्सल? एयर पार्सल, पोल्यूटेंट पफ, जो मैंने अभी लास्ट में बताया था आपको, जितना ऊपर राइज करेगा मेरे को उतना ही बढ़िया है। जो मैंने आपको एयर बैलून और दिवाली वाले बैलून की एग्जांपल दी थी मैंने, कि जितना वो ऊपर जाएगा वो ऊपर ऊपर मूव करता जाएगा, और जितना वो ऊपर मूव करेगा, जब मैंने एग्जांपल दिया पास, जितना ऊपर मूव करेगा उसको नया एटमॉस्फेयर मिलता जाएगा, जितना नया एटमॉस्फेयर मिलता जाएगा बैकग्राउंड कंसंट्रेशन पोल्यूटेंट की कम होती जाएगी। सो मेरे को ये देखना है कि अनस्टेबल एटमॉस्फेयर कंडीशन कब मिलेंगी, कब तब मिलेंगी जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट इज ग्रेटर देन द प्रोसेस लैप्स रेट। ठीक है, तो प्रोसेस लैप्स रेट आपका कितना है? अभी यहाँ पे देखो ये 10 डिग्री है, सॉरी 8 डिग्री है, तो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर 8 है, लेकिन पोल्यूटेंट का टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो दिस मींस पोल्यूटेंट ऊपर राइज करेगा। दिस इज डीएलआर, राइट? ये हाइट है बेटा, ये टेम्परेचर है। सो दिस इज एक्चुअल लैप्स रेट, दिस इज ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो दिस इज मोर नेगेटिव देन 10 this what is being prescribed over here, and this parcel is no doubt having great temperature than air, so it continue to rise, जो राइज करता जाएगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि जितना राइज ऊपर करेगा उतना इसकी पार्सल बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। लेकिन अगर ये मिल गया आपको, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मिल गई, when you have ELR is less than a WLR। अब कैसे देखो जरा, एग्जांपल दी मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल द ELR, द एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, whereas the PLR is 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अब देखो इसको विजुलाइज करो, अब द टेम्परेचर ऑफ द पफ एंड द एम्बिएंट एयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज, तो जो पोल्यूटेंट राइज, जो चिमनी से रिलीज हुआ पफ, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देन जैसे ही रिलीज होने के 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा, पार्सल का टेम्परेचर हो जाएगा 12 डिग्री। क्यों? अब देखो पीएलआर कितना था बेटा? पीएलआर था 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, मींस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे 8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा 1 किलोमीटर पे। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था 20 से 8 निकाल दिए तो पास का टेम्परेचर 12 है, और सराउंडिंग एयर टेम्परेचर अभी भी 13.5 है, डिपेंडिंग ऑन टोपोग्राफी, किस एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो सराउंडिंग एयर टेम्परेचर इज मोर, लेकिन पास का टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करेगा? उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। ये देखो, द पोल्यूटेंट विल बी सप्रेस्ड। तो पोल्यूटेंट सप्रेस हो गया तो उसको ऊपर आने देगा वो, बिकॉज पार्सल का टेम्परेचर कम हो गया और सराउंडिंग एयर का ज्यादा हो गया, तो pollutant will be suppressed, so it is undesirable state. Why? Because it's a far but obvious chances that pollutant may fall out sometime। fall out करके कहाँ करेगा? ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे फॉल कर गया तो नो डाउट जो पोल्यूटेंट ऊपर है, रिलीज हो रहा है, वो सारा ग्राउंड लेवल कंटेमिनेशन हो जानी बेटा आपकी। सो वी रियली वांट दिस शुड नॉट हैपन, सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। तो उसके अकॉर्डिंग हम रिलीज टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्री में से। जो इंडस्ट्री में, जिस एरिया में इंडस्ट्री है, सो बठिंडा में है, सो पंजाब में है, सो यूपी में, हरियाणा में है, उस केस में हम देखते हैं कि उस एरिया का लैप्स रेट क्या है। तो लैप्स रेट क्या है? तो लैप्स रेट के अकॉर्डिंगली मैं पोल्यूटेंट का जो लीज टेम्परेचर वो डिसाइड करूंगा, ताकि मेरे पोल्यूटेंट सप्रेस ना हो, वो राइज करें अकॉर्डिंग टू पीएलआर एंड डीएलआर, तो पीएलआर और ईएलआर के अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये मेरा कंडीशंस है। तो दिस इज न्यूट्रल कंडीशन बेटा, कि वेयर यू हैव बोथ आर इक्वल। ओके, तो न्यूट्रल स्टेबिलिटी occurs when the ELR is of the same or PLR, ये भी डिजायरेबल नहीं है। सो you have a conditional instability occurs as both stable and unstable atmosphere within the same stability zone। तो चांसेस है कि कहीं पे राइज करेगा, कहीं पे फॉल करेगा, कहीं पे राइज करेगा, कहीं पे फॉल करेगा। तो ये डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? बिकॉज आपका ELR इज इक्वल टू PLR। तो हियर you have a conditional instability
So that is existence of both stable and unstable atmosphere. You can might judge. देख लो, सोच के देख लो कि वो जो पार्सलाइज कर रहा है, कुछ टाइम पे उसको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, कुछ हाइट पे जाके उसको टेम्परेचर कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो पार्सल राइज भी करेगा और सप्रेस भी होगा. तो दिस इज अगेन नॉट रिक्वायर्ड. So we really require the first case when total instability will unstable conditions will be there. Absolute instability occur. Normally it is occur when you have ELR is greater than PLR. So this is something I want to explain. This is something very important. If you doubt, you can discuss later on, but I want to move very forward because काफी कुछ डिस्कशन का पार्ट रह गया हमारा. ठीक है जी. So this is okay, but everybody, so if you have any doubt, you can discuss later on, no doubt. Now this is again very important concept, the temperature inversions. Temperature inversions क्या होता है बेटा, हमको समझा दूं पहले एक बार, फिर आगे मूव कर जाऊंगा फटाफट. तो temperature inversions is basically, you know कि this is the common state. This is the common state. You have a warm air at the bottom, cool, cooler. So moment you go up to the higher altitude, mountains पे जाते हो, माउंटेन में और ऊपर जाते हो, तो आपको ठंडी एयर मिलती जाएगी. तो यहाँ वार्म एयर है, वार्म एयर, go up, cool, then cooler. So this is a normal behavior of a particular atmosphere. So temperature inversion is an abnormal condition in which the temperature of the atmosphere increases with altitude where it should decrease with altitude. Now listen, always normal conditions are when you're going to have the industries, when the pollutions are being released. So normal conditions are, if you have warm air here, go little up, cooler air, go little up, more cooler. Okay, so this is how the atmosphere is behaving normally. But when you go to the abnormal conditions, the temperature of the atmosphere increases where it should decrease, but it's going to increase with altitude. Why? This is just because of the temperature inversion. And this inversion is being caused by the solar radiations, and more promptly it is being caused by the pollution released by the industries. How? I won't tell you. So first case is a radiation inversion. So it occurs at low altitudes. Okay, now what is going to happen here? Warm air is being trapped between cool and cooler air, whereas the warm air layer should be at the bottom and cool air should be at the top. Okay, so during a temperature inversion, air pollutants released into the atmosphere, lowest layer is trapped there and can be removed only by strong horizontal winds. Now listen one thing very carefully. When the temperature inversion occurs, the cold air underlies the warm air at high altitudes. Due to radiations. Some way through radiations, the more heat is being released by some reactions. So by the reaction, more heat is being released. The warm air is being trapped there at altitude. So the warm air is being trapped with altitude due to some pollution also pollution released from the industries. The warm air is being trapped over here. So when the warm air is trapped over here, the cool air is beneath this warm air. So there might be chances that the particular air pollutants which are being released, they are trapped there, or they will stay there until you have a strong horizontal winds. Only it's possible they can be carried away. Otherwise, they will remain here for a longer time. Okay, so this is temperature inversions. So temperature inversion is going to, no doubt, going to define the fate of the pollutant which is going to release, because ultimately this कॉल पे हम काम करते हैं बेटा. जो मैंने पीछे बताया आपको कि एल्टीट्यूड पे ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपके टेम्परेचर ग्रेडियंट बनते जाएंगे. तो उस केस में आपके पास नॉर्मल बिहेवियर है कि आपके पोल्यूटेंट जैसे रिलीज हुए, पफ रिलीज होता जाएगा, ऊपर मूव करता जाएगा. लेकिन अगर पफ को यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और मिल रहा है, ऊपर कम मिल रहा है, फिर ज्यादा मिल रहा है, फिर कम मिल रहा है, फिर ज्यादा मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से पोल्यूटेंट आपका सप्रेस हो जाएगा, जो मैं आपको बताया अभी. बिकॉज रेगुलेशन सप्रेस क्यों होगा? बिकॉज उसको जो मैंने बताया आपको कि कंटिन्यूस डिक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर, पर यहां डिक्रीज है, फिर इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है. So there might be chances that the air pollutant which are being released are trapped there inside that layer. क्यों लेयर ट्रैप हो गए? क्योंकि उसके ऊपर ठंडी एयर मिल गई, उसके ऊपर गर्म एयर मिल गई आपको. तो there are chances that they can be trapped there. Once they are trapped there, तो वहां पे chances क्या होता है कि अगर वो ट्रैप रहेंगे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, थ्रू precipitation they can come down. Then they come down, they can be released to the atmosphere. Sorry, this soil or vegetation. So inversion is again second type of inversion is also there. That's called
subsidence inversion. This is just because of the pressure gradient. Now, what is pressure gradient? I'm going to explain you what is pressure gradient. Now, pressure gradient is what when the upper layer, see this is a warm layer, this is cooler layer, this is cool layer. So they have a different pressures over here. So there will be a delta P. So this delta through this delta P, why delta P? The pressure gradient. The warm air is having a different pressure, cool air is having a different pressure, cooler is having a different pressure. So accordingly, the air is going to suppress from the top the bottom layer. When the air is going to suppress from the top of the bottom layer, what ultimately happens? So there will be adiabatic heating of the air. कैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे प्रेस करते हैं हमने पढ़ा होगा, बट जैसे प्रेस करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन करने से हीट जनरेट होती है, सो नॉट. अब जो ऊपर लेयर है बेटा उसमें प्रेशर डिफरेंस है तो उसको कंप्रेस करेगी नीचे लेयर को. जैसे इसको कंप्रेस करेगी, कंप्रेस करने के टाइम क्या होगा, उसके बीच नीचे वाली लेयर एडियाबैटिकली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा बेटा. तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. सो देयर विल बी अ प्रेशर ग्रेडियंट, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट मच ऑफ ए चांसेस दैट कि आपके पोल्यूटेंट जो एक नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, राइज करने चाहिए टू डू प्रेशर ग्रेडियंट. क्यों? बिकॉज ऑलवेज इट इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग प्रेशर P1 टू P2. लेकिन वो उल्टा हो जाए तो मेरे ख्याल से पोल्यूटेंट जो ऊपर जाना चाहिए वो नीचे आ जाएंगे सारे आपके. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर सिस्टम्स, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन्स, nothing more than that. Okay, so you can go through this. So this thing I was explaining, beta. Here, see this. Descending air is compressed and warms adiabatically, जो मैं बताया था मैंने, because of temperature inversions. और ये frontal inversion आपका कुछ नहीं है, temperature inversion है, मैं बताया था. देखो बेटा, cold air है, warm air है. So warm air stops rising when it encounters a warmer air above it. Yes or not? Warm air stops rising when it encounters a warm air above it. Because और environmental lapse से totally उल्टा हो गया यहाँ पे. So that's why it stopped rising. तो ये यहीं पे stable हो जाएगी. और हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे बेटा. अगर यहीं पे स्टेबल हो गई तो pollutants will remain here in high concentration, and what obvious chances that they may fall out very easily from here. Okay, so ये मैं एक्सप्लेन कर चुका. अब ये थोड़ा सा मैं बच्चों आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा बताता हूँ क्या है, फिर मैं आपके लिए छोड़ दूँ 2-3 स्लाइड्स, फिर आगे मूव कर रहा हूँ फटाफट. दिस इज व्हाट नाउ. अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा जो स्टैक, ये आपका इंडस्ट्री का स्टैक है, देखिए इस स्टैक में से गैसेस रिलीज हो रही हैं जो आपने हमेशा देखी होंगी. हाउ दिस इज बिहेविंग, दिस इज कॉल्ड प्लूम. This is called plumes. Plume is nothing. The gases which are coming out from the chimney, how they are behaving. This is called plume behavior. So this is basically the manner in which the stack emissions. You know, this is stack. This is called stack or chimney. Where the gases are being released. This is basically how the stack emissions diffuse. That is how plume behaves. Plume behavior means how gases are going to behave, primarily due to, is a function of stability of the atmosphere, no doubt, in addition to wind speed and wind direction. So you have a wind speed over here, wind direction over here, everything is here. So in addition to wind speed and wind direction, it is also dependent upon the stability of the atmosphere. Okay, so changes in the vertical temperature distribution significantly influence the behavior of plumes. अब सो एग्जांपल दे रहा हूं फिर आपको और क्लियर होगा चीज के लिए. सी दिस one process is called looping. So looping, how the looping occurs, this is called looping. See this is looping. So looping occurs when the large thermal up and down draughts are developed in the unstable air, and plume may brought to the ground for a short interval of time. So see here, the stable air is unstable, but air is unstable in such a level that it may cause large up and down draughts. तो इतनी भी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए ताकि ड्रॉट जो है वो ग्राउंड पे आ जाए. ड्रॉट ग्राउंड पे आ जाएगा तो मेरे ख्याल से जितने भी पोल्यूटेंट यहाँ रिलीज हुए हैं अल्टीमेटली एक बार तो नीचे आएंगे एंड देन गो अप. क्यों गो अप? अभी मैंने बताया था आपको, जो आपकी कंडीशंस हैं यहाँ पे वेरी हो रही है बेटा, टेम्परेचर वेरी हो रहा है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो चांसेस है कि जब एक बार ग्राउंड लेवल पे आ गए तो दिस may cause high concentration of pollutant at the ground level or ultimately some distance from the chimney. Okay, so this is something called looping of the plume, looping behavior of the plume. I think so you must go through this. What is looping? Looping is basically
occurs when the large thermal means temperature variations, up and down droughts are developed. और एक कब होता है, जब आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वेरी होता है बेटे. तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वेरी होगा तो अनस्टेबल एयर होगी, तो अनस्टेबल एयर से चांसेस है कि वो प्लूम एक बार राइज करने के बाद ड्रॉट की नीचे आए बिल्कुल ग्राउंड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. सी दिस and it's coming to the ground at particular distance. So when it's coming to ground level for a shorter amount of time, so it may cause high concentration of pollutants in that case. So it may chances that they can spread here with the local atmosphere over here, or it can rise also. So it is something like looping when you have to go through. Okay. So ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आपके लिए मैं एक पर छोड़ रहा हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया. So there is a coning also you can go through, and there is a fanning, lofting. बस ये लास्ट है बेटा, एक बार पढ़ लेना, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे. बट मैं जो अब डिस्कस करने वाला हूँ वो वाला ये वाला है, बिकॉज ये सिलेबस में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हम आपको डालने वाले हैं, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, ये चीजें मैं थोड़ा आपकी 3-4 स्लाइड आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, जस्ट गो थ्रू इट, फाइन. और ये आप पढ़ के में से आपने डिस्कशन मोड में वापस आना है नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम आपका मोड करें. ओके बेटे, क्योंकि ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं करनी आपको हमने. सो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट लास्ट टॉपिक है बेटा एयर क्वालिटी में, जो हम वाइंड अप करने वाले हैं. बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आए आपके एंड में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में. ओके, सो दिस इज एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल स्ट्रेटजीज. When you're talking about air quality management, let me handle one. बट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्लाइड्स में आज अपलोड कर दूंगा नो डाउट. बट ये आप खुद बोलो एक बार, ठीक है. सो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में आपके पास 3 वो है पॉइंट. सो वाइदर यू वर्क एट सोर्स और एट अ वर्किंग लेवल, ट्रांसपोर्टेशन लेवल और रिसेप्टर लेवल. So basically when you're talking about, you need to control these particular things at the source level using some control equipments, which I'm going to discuss right now with you. Because once it's being released at transportation level, then you could do nothing but the modeling. Modeling means how they're going to behave, and at receptor level it is going to have some bad impacts. So that's why you need to act on these kind of air quality management at the source level itself with the control equipments, which I'm going to discuss with you in detail in the coming lectures, no doubt. So when you're talking about this thing, control of air pollutants, then you need to have first of all mechanisms involved. No doubt, go through it very fast. I'm going to discuss these things in detail in the coming slides. I'm not going to leave anything which is relevant to this particular thing which I'm discussing right now over here. So you have two kind of things, either particular pollutants or gaseous pollutants. मैंने पहले explain कर चुका हूं आपको. gaseous pollutant में आपके SOx आ गया, NOx आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया. ओके, सो पर्टिकुलर मैटर में मैंने आपको बताया था PM10, PM2.5. So you have two kind of air pollutants, particulate and gaseous pollutants, beta. Mind it. So when you talk about particulate pollutants, a particulate matter 10 or 2.5, the controlling mechanism which are being involved, जो हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपमेंट में, either it can be gravity settling, or it can be centrifugal, or it can be electrostatic, it can be filtration, it can be scrubbing, which I will be discussing in detail in coming lectures, no doubt. So if you're talking about gaseous pollutant, SOx, NOx, monoxide, carbon dioxide, and other things, so basic mechanisms which are being involved for removing these kind of gaseous pollutant are absorption, combustion, and masking. Masking is basically you mask that particular pollutant by taking some particular compounds which are going to make a complex with those kind of compounds. उनकी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन को मास्क कर लेंगे बेटा, ठीक है. तो इसका भी डिस्कस करेंगे नो डाउट हम, ठीक है जी. So before actually going into detail of the air pollution control devices, APCD, जो बताने वाला हूँ, APCD, air pollution control devices, going into detail of design of each and everything, you must know first of all factors which are going to affect the efficiency, control, design, selection of these kind of control equipments. So these parameters are there. What kind of particular concentration you are handling? Low, medium, high. What kind of particle size you're going to handle? Low, medium, high. Particulate size क्या है, कितने छोटा है, माइक्रोग्राम में है, मिलीग्राम में है, ओके, ग्राम्स में है.
तो ये डिसाइड करना पहले बहुत जरूरी है, तब उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज करोगे जो टाइम आपको बताने वाला हूँ. देन वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, कंपोजिशन ऑफ द गैसेस, नो डाउट मॉइस्चर कंटेंट कितना है. अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है, ज्यादा है, तो आपके एपीसीडी की एफिशिएंसी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू. एंड नो डाउट टेम्परेचर, बिकॉज वर्किंग टेम्परेचर इज गोइंग टू affect the efficiency of APCDs, air pressure control devices. And no doubt, when you're going to have design considerations, no doubt you always work upon these three things. Efficiency kitni hai? 70, 80, 90. And for that 18% or 90% efficiency, what is the pressure drop? If the pressure drop is high, more energy you have to provide. Yes or not? तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको. And no doubt एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी आपको. So these three parameters you need to look into, that is efficiency, pressure drop, and cost before actually going into detail of APCDs. So I think so I have made myself very clear. The first APCD, okay, 12.6 is there, 12.10 तक क्लास है बेटा आपकी, ठीक है. So I'm winding over here. Next class I'm going to discuss about the gravity settling chamber in details. See this. So I'm going to discuss the design details. So next class थोड़ा ध्यान से अटेंड करना बेटा. ये देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा डिजाइन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं और ये आपको एग्जाम में आएगा बेटा. ओके, इज दैट ओके बेटा?